Good evening to all. I hope I am audible to you. Hello everybody. Good evening to all. I hope I am audible to you. Hello everybody. Good evening to all. I hope I am audible to you. Hello everybody. Good evening to all. I hope I am audible to you. Hello everybody. Good evening to all. I hope I am audible to you. If yes, please write down comment. Yes. अगर साउंड आ रहा है प्रॉपरली तो यस लिखिए कमेंट बॉक्स में. अगर साउंड प्रॉपर आ रहा है तो यस लिखिए कमेंट बॉक्स में. If you are getting my voice, please write down yes in the comment box. So we was discussing about the distillation chapter from your pharmaceutical engineering, right? Distillation. So we have seen some basics points and simple distillation. So we have seen this different distillation distillation assembly. This is known as distillation assembly, and the parts of distillation assembly, you know that RBF, column, this is known as a condenser, this is known as a receiver. We have seen what do you mean by distillation. What is a distillation? The purpose of distillation is nothing but the separation. It is one of the partial separation method. We have seen this. We have also seen the application of distillation already in the last lecture. We have seen the theory of distillation. So what do you mean by binary mixture? So they are the miscible in all proportion. Okay. Examples you have to remember. Question already aa chuka hai. What do you mean by ideal solution? We have already seen. So open mixing, there is no change in the properties of component, individual component except dilution, right? Water we have seen ideal solution. After that we have seen Raoult's law. Raoult's law means the vapor pressure, the total vapor pressure of mixture is nothing but the individual vapor pressure multiplied by its mole fraction. That is a Raoult's law. What do you mean by real solution? That is a non-ideal solution. What do you mean by ideal solution? We have already seen. After that we have seen the deviations of Raoult's law. Okay? Deviation, negative deviation, positive deviation, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है. We have already seen positive deviation, we have seen negative deviation. After that we have also seen the Dalton's law. After that we have seen the reasons for positive deviation, reasons for negative deviation, why there is a reasons for positive and negative deviations. We have already seen. After that we have seen this these two diagrams I have explained you. This is known as ideal solution which follows Raoult's law. This is known as a positive deviation and this is known as a negative deviation, right? So we have also seen the general equipment for the distillation. So on a laboratory scale, you are using round bottom glass, then column, then distillation column, then you are using condenser and a receiver. But on laboratory scale, distillation still is used. Distillation still is used on laboratory scale. So condenser, receiver, these are the parts of your distillation apparatus. Condenser may be type aata hai. There are different type of condenser. Okay, and in the receiver also there are receiver. So Florentine receiver is to separate the volatile oil and water. Remember about this. After that we have seen what do you mean by volatility concept. Relative volatility of the component. We have seen the what do you mean by zeotropic mixture. What do you mean by a zeotropic mixture? Zeotropic mixture means there is a difference in the boiling point in two liquids. If mixture is there, जैसे for example है ना इथेन and propane है ना, या फिर benzene and toluene. अगर ये example ले तो if mixture of benzene and toluene, there is a definite difference in the boiling point of these two. That's why they can be easily separated, right? And that's why they are known as zeotropic mixture. Azeotropic mixture means what? They are also known as a constant boiling mixture. They are known as a constant boiling mixture because when you boil them and when you convert them into vapor in distillation, now what is expected that it is desired that so in the vapor phase a component having low boiling point
that should be more. But what happens in the azeotropic mixture? They are known as a constant boiling mixture, and the vapor phase also have same composition as that of the liquid mixture. Right? This is chloroform, acetone, pyridine, acetic acid, water, nitric acid, azeotropic mixture. For example, 89.43% mole of ethanol and water at atmospheric pressure, they will have relative volatility 1, and there is very less difference in the relative volatility of these two components. That's why they are known as azeotropic mixture. Now we have seen types of distillation. So simple distillation on laboratory scale you are doing, also known as the differential distillation based upon the difference in the volatilities of the component, right? Bumping, you can avoid bumping during boiling by addition of some small piece of porcelain. Right? After that we have seen the flash distillation. So in the flash distillation, so hot liquid is passed from high pressure zone to low pressure zone. There is a rapid evaporation, and that is used in the crude oil industry, right? We have seen. So after that we have also seen flash distillation about this. So application of flash distillation I have covered in the last lecture. Now next is nothing but the fractional distillation. Very, very important, fractional distillation. Okay, everybody, you have to join the lecture. If you are listening lecture, please write yes in the comment box you are getting my voice. अगर आपको साउंड आ रहा है तो यस लिखिए, ग्रुप में मैसेज करो की बाकी जॉइन हो जाओ, क्योंकि गरज अपने को है ना, गरज आपल्याला आहे, त्यांना गरज नाही आहे, गरज मला आहे, कारण मला शिकवायचं आहे. त्यामुळे काय आहे की माझं कामच आहे लेक्चर घेणं. किती कंटाळा आला किंवा किती नर्वस झालो तरी घ्यायचंच आहे लेक्चर, कारण काय आहे की बाबा तुम्हाला गरज नाही, मला गरज आहे ना. ठीक आहे, थोडे दिवस जावा, तुमची मला गरज राहणारच नाही है ना. तुम्हाला ते 17-18 हजार रुपयाचे लेक्चर जे असतात ना तेच आवडतं. फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन काय आहे? इट इज द प्रोसेस. ओके, फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस इन विच वेपरायझेशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर गिव राइज टू द मिक्सचर ऑफ constituent of which, है ना. So fractional distillation में क्या है? What is meant by fractional distillation? The process in which vaporization or vaporization of liquid will give rise to a vapors of mixture, okay, from which desired can be isolated in the pure form, is nothing but the fractional distillation, also known as a rectification. याद रखना है, fractional distillation को ही बोलते हैं आप rectification. Rectification is also known as a fractional distillation. Now in this case the fractionating columns are used. Normal columns नहीं होते इसमें, fractionating columns are used in the fractional distillation. It is used for the separation of miscible liquids. Separation of miscible liquids. Question आता है, example आते, example के ऊपर question. So miscible liquids like acetone and water, chloroform and benzene, they are separated by fractional distillation by using fractionating column. Fractionating column. So normally the fractional distillation is different. It differs from the simple distillation in that perspective. इसमें क्या होता है? In fractional distillation, a number of times the liquid mixture is vaporized and condensed. Number of times liquid mixture is vaporized and condensed. जैसे अपने देखा है already, this distillation is nothing but the partial separation method, है ना. So in the fractional distillation, compound is vaporized and condensed, mixture is condensed, mixture of liquid is vaporized, condensed multiple times, right? Now a simple distillation is suitable for the mixture, and a simple distillation हम suitable है जब आपके मिक्सचर में सिमिलर वोलेटिलिटी के कंपाउंड नहीं है. Resulting into distillate is more concentrated in the form, in the more volatile component than original mixture. मतलब क्या है कि when simple mixtures are there, there is a difference in the boiling point, there is a difference in the volatility when you vaporize them, when you boil them. So vapors of the component having less boiling point, है ना, and they will be vapor, है ना. जब आप दो मिक्सचर है लिक्विड के, आप डिफरेंस है उनके बॉइलिंग पॉइंट में, वोलेटिलिटीज में, तो जब आप बॉईल करते हो तो
जिसका वोलेटिलिटी ज़्यादा है ना, मीन्स जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो वो जल्दी वेपर बनता है और दूसरा नहीं बनता, तो यू कैन इजीली सेपरेट बाय यूजिंग सिंपल डिस्टिलेशन, ओके। एंड जो वेपर्स है, in the simple distillation the vapors will have more concentration of highest boiling component. Okay. Now if simple distillation is carried out repeatedly, it will give more concentrated compound with the low boiling point with less portion of compound having higher boiling point. मतलब क्या कि अगर सिंपल डिस्टिलेशन आपने रिपीट किया वही ना, मतलब पूरा असेंबली नहीं, जो आपका कॉलम है डिस्टिलेशन कॉलम, उसमें फ्रैक्शनेटिंग कॉलम डाल के, इफ देयर इज अ रिपीटेड वेपराइजेशन एंड रिपीटेड कंडेंसेशन, व्हाट विल हैव, you will get a purest form of the component which is having less boiling point or more volatility. Now this is known as a fractional distillation assembly for fractional distillation on laboratory scale. So what you are using here, a fractionating column. यहाँ पे fractionating column से, ये जो column है is known as a fractionating column. Material mixture and miscible liquids जो है, they will be vaporized, some vapor will be condensed. Here is a partial condensation and partial vaporization. तो आपका जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, इसमें क्या होता है, पार्शियल कंडेंसेशन एंड पार्शियल वेपराइजेशन, पार्शियल कंडेंसेशन रिपीटेडली. दिस इज apparatus which is used on a large scale के ऊपर, on a industrial scale this is used, you can see over there. So a lot of fractionating columns are there. So partial condensation, partial vaporization, partial condensation and partial vaporization. Right. So there is also one theory related to this fractional distillation. एक theory भी है उसके लिए, efficiency of fractionating column. Efficiency क्या है, कितना efficient है, you can see over here. So in the fractional distillation, the process which involves the vaporization of liquid mixture, which will give rise to a mixture of constant from which desired one can be separated in a pure form. So also known as the rectification, दो बार हो चुका है. Method used to separate the miscible volatile liquids. Okay, method used to separate the miscible volatile liquid whose boiling point, दोनों का boiling point क्या है, whose boiling point is close by means of, if two miscible liquids they are having boiling point क्लोज है ना, एक का है 79, एक का है 80, तो to separate them fractionating by using fractionating column, this is a fractional distillation. Now in the fractionating column में क्या होता है, in the fractionating column partial condensation of vapor it is allowed to occur so that less boiling point having component, जो component इसका boiling point less है. So in the fractionating column partial condensation of vapor is allowed to occur. partial condensation होता है उसका, तो क्या होगा, less boiling point जिसका है वो जल्दी कंडेंस होगा, है ना, and return to the still or flask, leaving more pure vapors to pass in the condenser. Efficiency of this fractionating column is given by, मैककेबे थ्योरी. ये थ्योरी इंपॉर्टेंट है, मैककेबे थ्योरी. So according to this number of theoretical plates, मतलब number of fractionating column used to evaluate the efficiency of fractionating column, number of theoretical plates. तो height equivalent to theoretical plate HTP, ये HTP आपको chromatography में भी आएगा, so this term you will find in a chromatography also in analysis. But here HTP is equal to n upon h. n क्या है, number of fractionating column, h क्या है, उसका height है. तो height equivalent to
theoretical plate. Efficiency of fractional distillation is known by Machiavelli theory. ये याद रखना है, Machiavelli theory, right? Now applications of fractional distillation क्या है? What are the applications of fractional distillation? Applications of fractional distillation, right? For the separation of miscible liquids, like for example acetone and water, chloroform and benzene, to separate the mixture when boiling point of mixture is intermediate between those of pure liquids or pure compounds. तो याद रखना है, benzene and chloroform they are separated by fractional distillation, acetone water they are separated by fractional distillation. ये एग्जांपल्स के ऊपर क्वेश्चन आते ही आते हैं बहुत सारा, ठीक है. नाउ बॉइलिंग पॉइंट कंपोजिशन मिक्सचर, बॉइलिंग पॉइंट कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर, तो मतलब अगर ए एंड बी मिक्सचर है आपके साथ में, ए एंड बी मिक्सचर है आपके साथ में, तो बॉइलिंग पॉइंट कंपोजिशन क्या रहेगा उनका? बॉइलिंग पॉइंट कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर, कंपोजिशन ऑफ लिक्विड एंड वेपर फेज, कंपोजिशन ऑफ लिक्विड एंड वेपर फेज, मतलब लिक्विड में तो दोनों 50-50% है, लेकिन वेपर में कितना है? ए एंड बी का मिक्सचर है आपके पास में, जब लिक्विड है 50-50% है दोनों का, लेकिन जब वेपराइज होता है वो वेपर में कितना किसका परसेंटेज? कंपोजिशन ऑफ लिक्विड एंड वेपर फेज changes continuously as repeated vaporization and condensation take place. ना repeated vaporization and condensation होता है इसमें ना fractionating में, right? तो है ना, as there is a repeated condensation and repeated vaporization and condensation, so the composition of liquid and vapor phase will change continuously. Boiling point composition curve, boiling point composition curve or boiling point composition curve, they are helpful to know whether there is a separation possible or not, है ना. Boiling point composition curves gives you idea how whether there is a separation possible of two mixture, whether it is easy or difficult, है ना. तो मिक्सचर का सेपरेशन पॉसिबल है नहीं है, या फिर है तो इजी है, डिफिकल्ट है, ये आइडिया आपको कौन देगा? बॉइलिंग पॉइंट कंपोजिशन कर्व. नाउ हाउ यू हैव टू कंस्ट्रक्ट द कंपोजिशन ऑफ, हाउ यू हैव टू कंस्ट्रक्ट द बॉइलिंग पॉइंट कंपोजिशन कर्व. बॉइलिंग पॉइंट कंपोजिशन कर्व कैसे बनाएंगे आप? तो दे आर कंस्ट्रक्टेड बाय बॉइलिंग पॉइंट कंपोजिशन कर्व्स, दे आर कंस्ट्रक्टेड बाय, है ना, मिक्सचर ऑफ लिक्विड ए एंड बी आर प्रिपेयर्ड. पहले तो मिक्सचर बनाना है आपका ए एंड बी का इन डिफरेंट कंपोजिशन, मतलब पहले ए का 20%, बी का 80% ऐसा, है ना, बाद में 30-70, बाद में है ना 50-50, बाद में 60-40 ऐसा. तो मिक्सचर ऑफ ए एंड बी आर प्रिपेयर्ड इन डिफरेंट कंपोजिशन. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईच मिक्सचर इज डिटरमाइंड. बॉइलिंग पॉइंट हर एक का, मतलब 20-80 का परसेंटेज का मिक्सचर है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 50-50 का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 60-40 का क्या है. तो यू हैव टू मेजर द बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो. नाउ एट अ बॉइलिंग पॉइंट, at a boiling point of mixture, at a boiling point of mixture, liquid composition as well as vapor composition of each component is analyzed. मतलब क्या, at a boiling point, boiling point के ऊपर जब liquid composition है, liquid है mixture, liquid mixture है, तो उसका composition क्या है, component क्या है, और वो जब vapor बनता है तो उसका component क्या है. तो at a boiling point of mixture, liquid as well as vapor composition of each component is analyzed. ठीक है, बाद में क्या करना है, बाद में बॉइलिंग पॉइंट यू हैव टू टेक ऑन वाई एक्सिस एंड कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर यू हैव टू टेक ऑन एक्स एक्सिस, राइट. बॉइलिंग पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, जैसे बॉइलिंग पॉइंट ऑन वाई एक्सिस एंड कंपोजिशन ऑन एक्स एक्सिस, वहां पे आपको कुछ कर्व आएंगे, कुछ क्या आएंगे, कर्व, यू गेट सम कर्व. और इसके ऊपर क्या रहेगा, पेपर्स, इसके नीचे क्या रहेगा, लिक्विड. यहाँ पे लिक्विड रहेगा, यहाँ पे पेपर रहेगा, तो बीच में क्या रहेगा, बीच में मिक्सचर रहेगा, वाटर, लिक्विड प्लस वेपर. बॉइलिंग पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर ऑन एक्स एक्सिस. अपर कर्व विल गिव यू वेपर फेज कंपोजिशन. अपर कर्व मतलब, अपर कर्व क्या है, वेपर कर्व बोलते हैं इसको, और वेपर फेज कंपोजिशन. लोअर कर्व विल गिव यू लिक्विड फेज कंपोजिशन. ठीक है. नाउ
डिफरेंट एरिया विल हैव डिफरेंट लिक्विड एंड वेपर, है ना। डिफरेंट एरिया में क्या रहेगा, डिफरेंट लिक्विड रहेगा या डिफरेंट लिक्विड एंड वेपर कंपोजिशन रहेगा या फिर लिक्विड प्लस वेपर कंपोजिशन रहेगा। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है ना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तो उसकी डिफरेंट टाइप है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में टाइप्स आता है और टाइप 1 इज नोन एज अ मिसिबल लिक्विड। टाइप 1 फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज फॉर मिसिबल लिक्विड, आल्सो नोन एज आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल सॉल्यूशन के लिए कैसे है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, आइडियल सॉल्यूशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टाइप्स, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टाइप्स, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टाइप 1 फॉर मिसिबल लिक्विड और फॉर आइडियल लिक्विड। सुटेबल फॉर मिक्सचर हैविंग ब्लड प्रेशर, सुटेबल फॉर मिक्सचर हैविंग बॉइलिंग पॉइंट इंटरमीडिएट बिटवीन दोज ऑफ प्योर कंपाउंड, है ना। तो अगर मिक्सचर जो है उसकी बॉइलिंग पॉइंट जो है ना वो दोनों ना इंटरमीडिएट है, दोनों के बीच में है एज ऑफ प्योर कंपोनेंट, तो सुटेबल फॉर मिक्सचर हैविंग बॉइलिंग पॉइंट इंटरमीडिएट बिटवीन दोज ऑफ प्योर कंपोनेंट। मतलब एक का बॉइलिंग पॉइंट है 80, एक का बॉइलिंग पॉइंट है 100 और मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 90। तो ये मिसिबल लिक्विड है, मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट है 90, उसमें जो मिक्सचर है एक लिक्विड है उसका बॉइलिंग पॉइंट है 80, एक का है 100। तो टाइप 1 और मिसिबल लिक्विड आइडियल सॉल्यूशन, तो टाइप 1 फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और टाइप 1 फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करो, है ना, दिखाऊंगा मैं आपको नीचे। तो दैट इज सुटेबल फॉर मिक्सचर हैविंग बॉइलिंग पॉइंट इंटरमीडिएट बिटवीन द दोज ऑफ प्योर कंपोनेंट्स। नाउ either there is a neither maximum, there is a neither maximum or nor minimum in the curve. So system is also known as zeotropic, system is also known as zeotropic। zeotropic mixture मतलब क्या कि difference in the boiling point, also known as zeotropic mixture। एग्जाम्पल है आपका इसका बेंजीन एंड टोलिन, यहाँ पे बेंजीन एंड टोलिन, बेंजीन एंड टोलिन, then carbon tetrachloride and cyclohexane, then water and methanol, benzene and toluene, carbon tetrachloride and cyclohexane, then आपका आता है ना water and methanol, ठीक है। These are known as zeotropic mixture, क्यों? Because there is a definite difference in the boiling point of these mixture, है ना। सो सेकंड आता है, यू कैन सी ओवर हियर, तो यहाँ पे डायग्राम देखो पहले यहाँ पे। तो दिस इज अ बॉइलिंग पॉइंट कंपोजिशन कर्व फॉर मिसिबल लिक्विड, मीन्स फॉर जियोट्रोपिक मिक्सचर्स, फॉर मिसिबल लिक्विड और जियोट्रोपिक मिक्सचर। सो इफ यू प्लॉट ए टेम्परेचर ऑन वाई एक्सिस एंड कंपोजिशन ऑन एक्स एक्सिस, ठीक, तो देखो ऐसा कर्व आएगा। तो right, so at this point the composition of liquid B is 100%, at this point composition of liquid A is 100%। नीचे क्या है मिक्सचर है। now the upper curve is known as a vapor curve and the lower curve is known as a liquid curve, and बीच में क्या है, in between these two is a vapor plus liquid, vapor plus liquid। so it is a boiling point composition curve for zeotropic mixture, और है ना। now second आता है azeotropic mixture। second क्या आता है azeotropic mixture। azeotropic mixture मतलब क्या है, they are known as constant boiling mixtures। मतलब क्या कि बाबा उनको बॉइल किया ना तो उनका लिक्विड फेज में जो कंपोजिशन है, मतलब लिक्विड में अगर मान लीजिए 50-50 है, वही वेपर बॉइल करने के बाद में वेपर में भी क्या रहेगा 50-50% है। क्यों? because there is no difference in the boiling point, very less difference in the boiling point, that's why they are known as a azeotropic mixture or constant boiling mixture, and they cannot be separated in the pure form by simple distillation, क्योंकि उनका क्या है ना। so constant boiling mixture they cannot be separated into pure component by simple distillation as the volatility of them are equal। so azeotropic mixture distills unchanged at a constant temperature and they will deviate also Raoult's law। azeotropic mixture azeotropic mixture they will deviate the Raoult's law, they are known as constant boiling mixture। for example दिया है हमने यहाँ पे 89.43 मोल परसेंटेज ऑफ इथेनॉल एंड वाटर, ये इतना कंपोजिशन इथेनॉल का एंड वाटर का,
ये क्या करता है, इट विल गिव एजियोट्रोपिक मिक्सचर एंड गिव, इसका रिलेटिव वोलेटिलिटी होता है व्हाट, रिलेटिव वोलेटिलिटी 1 से ज़्यादा होना चाहिए. तो इफ रिलेटिव वोलेटिलिटी ऑफ मिक्सचर इज मोर देन 1, तो इट इज इजी टू सेपरेट. अगर है ना 1 कब आता है रिलेटिव वोलेटिलिटी, रिलेटिव वोलेटिलिटी मतलब क्या है, वोलेटिलिटी ऑफ कंपोनेंट ए डिवाइडेड बाय वोलेटिलिटी ऑफ कंपोनेंट बी. इसका 1 कब आएगा, जब ये दोनों सिमिलर होंगे तब. तो इट इज नॉट इजी टू सेपरेट. जैसे मान लीजिए इसका 5 है और इसका भी 5 है, 1 आएगा ऑब्वियसली. सो दैट्स व्हाई एजियोट्रोपिक मिक्सचर they are having close boiling point, they are having less volatility, okay, they are having less or no difference in the volatility. That's why they are known as a azeotropic mixture or constant boiling mixture, or they will distill unchanged and they will deviate the routes. Now for this type of azeotropic mixture, the boiling point composition curve is nothing but this. तो second वाला जो है boiling point composition curve. एजियोट्रोपिक मिक्सचर में 2 टाइप आता है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एजियोट्रोपिक मिक्सचर. फर्स्ट टाइप क्या है एजियोट्रोपिक मिक्सचर का, एजियोट्रोपिक मिक्सचर विद द लेस विद द मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, एजियोट्रोपिक मिक्सचर हैविंग मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट. दूसरा होता है एजियोट्रोपिक मिक्सचर हैविंग मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट. पहला है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन इनको बोलते हैं टाइप 2 कर्व. ये दूसरा नंबर का रूल्स है. so it is for non ideal solution, when solution when system will exhibit minimum value in a boiling point composition curve. मतलब system will have a minimum boiling point composition, minimum value in a boiling point composition as compared to देखो when है ना, system will have system will exhibit value in a boiling point composition, minimum value in a boiling point composition. So azeotropic mixture with the, also known as azeotropic mixture with a maximum vapor pressure and minimum boiling. इसका एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म एसीटोन ना, या फिर पायरिडीन एसिटिक एसिड, वाटर नाइट्रिक एसिड. नाउ इसमें क्या है कि मिक्सचर ऑफ वाटर नाइट्रिक एसिड एंड मिक्सचर ऑफ पायरिडीन एसिटिक एसिड, मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन. तो इनका जो मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट है ना, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर विल बी लेस. जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर एसीटोन एंड है ना वाटर एंड नाइट्रिक एसिड है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100, नाइट्रिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट कम रहता है. ठीक है, सो वाटर नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट मान लीजिए 50 है, तो ये इसका मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट 50 से भी कम है. So here component C is 100%, component D is 100% water. Component C is having less boiling point, इसका boiling point कम है. Component D का क्या है boiling point ज़्यादा है. ठीक है. Now the boiling point of mixture is less than boiling point of component, है ना, least boiling point having component. मतलब जो component का boiling point कम है उससे भी कम mixture का component का mixture का boiling point है. So that's why this type of azeotropic solution is known as a azeotropic solution with the minimum boiling point, also known as a azeotropic mixture with maximum vapor pressure and minimum boiling point. एग्जाम्पल दिया इसका है ना. तो ये एक कंपोनेंट सी है जिसका यहाँ पे बॉइलिंग कम है, बॉइलिंग पॉइंट कम है. डी कंपोनेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, हायर बॉइलिंग. ठीक है, हायर बॉइलिंग. इसका है लोअर बॉइलिंग पॉइंट, इसका है लोअर बॉइलिंग. और मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट है यहाँ, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर, है ना. सो सच काइंड ऑफ azeotropic solution is known as a azeotropic mixture with the maximum vapor pressure and minimum boiling point. तो इसमें आता है क्लोरोफॉर्म एसीटोन, इसका मिक्सचर, पायरिडीन एसिटिक एसिड का मिक्सचर, वाटर नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर. दे विल शो यू such kind of boiling point composition curve. So then mixture has a lower boiling point than the component with least boiling point. ठीक है. Now second type का azeotropic mixture आता है आपका, second type of azeotropic mixture
So isotropic mixture with the maximum boiling point. So maximum boiling point isotropic solution. So type 3 करो, थर्ड कर. So non ideal solutions. इसमें क्या है कि system will exhibit a boiling point high value. System will exhibit a maximum value in the boiling point composition curve. जैसे benzene ethanol water ethanol, benzene ethanol and water ethanol mixture, बेंजीन इथेनॉल का मिक्सचर है, फिर वाटर का इथेनॉल का मिक्सचर. तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे बेन है ना, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100, इथेनॉल का कम रहता है ना. तो जैसे मान लीजिए कि दिस इज द इथेनॉल ना, बॉइलिंग पॉइंट उसका कम है, दिस इज द वाटर. ठीक है. नाउ so in this third type, or also known as a mixture as a boiling, and also known as a isotropic mixture having maximum boiling point. So in this what happens, mixture has a boiling point higher than the component having higher boiling point. तो इसमें दो मिक्सचर में क्या है, कंपोनेंट है ना, ए एंड बी है. कंपोनेंट ए जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है. कंपोनेंट बी जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा है. मतलब कंपोनेंट ए मान लीजिए इथेनॉल है और कंपोनेंट बी वाटर है, तो वाटर इथेनॉल का मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट है. सो कंपोनेंट मिक्स द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस मिक्सचर कंपोजिशन इज मोर देन दैट ऑफ द वाटर, नोन एज अ मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट आइसोटोपिक सॉल्यूशन. ये टाइप्स होते हैं ना. सो नॉर्मली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या फिर आपका नॉर्मली आइडियल सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कंपोजिशन करो ये है. और बॉइलिंग पॉइंट कंपोजिशन करो फॉर आइसोटोपिक में दो आता है. सो आइसोटोप हैविंग मिनिमम बॉइलिंग है ना, मिनिमम बॉइलिंग मिनिमम वैल्यू इन द बॉइलिंग कंपोजिशन करो है ना, बॉइलिंग पॉइंट कंपोजिशन करो. एंड आइसोटोप हैविंग मैक्सिमम वैल्यू इन द बॉइलिंग पॉइंट कंपोजिशन करो. सो वो बोथ आर कंप्लीटेड, राइट. ये आपको किसी ने पढ़ाया नहीं होगा ना कॉलेज में, ना आपके बाकी दूसरे कौन से क्लासेस जो जिनसे आपको फैंसी क्लास बोलते हैं उनमें भी लिखा है. Nobody have told you this very. Now actual process of isotropic distillation. सीक्वेंस क्या होता है ना, सीक्वेंस क्या है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में. एक्चुअली सीक्वेंस क्या है, व्हाट इज मीन बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसमें होता क्या है. सपोज आपने ये फ्लास्क में मिक्सचर बॉईल किया, सो एंड वेपर कमिंग फ्रॉम दिस डिश, ओके, फ्लास्क, वेपर विल कम ओवर हियर, राइट. So suppose here is a first fractionating column. यहाँ पे क्या है, पहला fractionating column है. What will happen? So whatever vapors coming from the distillation flask, so it will be partially condensed over here. यहाँ पे partially condensed होगा. Initial vaporization from distillation flask, यहाँ पे vaporization हो गया, यहाँ पे condensing, तो यहाँ पे vaporization हो गया. तो इसमें मान लीजिए लिक्विड A एंड B है, तो B लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, A का कम है. Obviously liquid containing 20% है और उसके वेपोराइजेशन हो गया, और यहाँ पे पहला आपका फर्स्ट फ्रैक्शनेटिंग कॉलम आ गया. तो पार्शियल कंडेंसेशन यहाँ पे होगा, पार्शियल कंडेंसेशन एंड रीवेपोराइजेशन. तो यहाँ पे देखो, यहाँ जो बी था उसके साथ में बी, यहाँ पे बी कंडेंस होकर नीचे आएगा, तो ए का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा है. So condensed vapor containing 60% A and vapor containing 60% A are formed from liquid containing 20% A. Now again वही vapor second fractionating column में जाएंगे, तो यार condensed vapor containing 90% A, यहाँ पे 90% A का ही कंपोनेंट है. vapor containing 90% A are formed from liquid containing only 60%. liquid containing ओनली 60%. तो मतलब ए का ही कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जा रहा है ना, जैसे जैसे फ्रैक्शनेटिंग बढ़ रहा है. तो थर्ड फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में गया, फिर से यहाँ पे वेपराइजेशन होगा, फिर से कंडेंसेशन होगा. वेपर कंटेनिंग 98% ए और फ्रॉम लिक्विड कंटेनिंग 90%. तो लास्ट में क्या होगा, 98% प्योर वेपर कंडेंस हो जाएगा, नोन एज अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. रिपीटेड वेपराइजेशन कंडेंसेशन to get a maximum concentrated distillate.
नाउ आइसोट्रोपिक सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन व्हिच डिस्टिल्स अनचेंज्ड एट अ कांस्टेंट टेंपरेचर सॉल्यूशन इज नोन एज आल्सो नोन एज कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। तो आइसोट्रोप मतलब क्या है कि दोनों एक में के साथ में इतने पैक मिक्सचर बनाते हैं तो उनको सेपरेट करना इजी नहीं। तो आइसोट्रोपिक सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन व्हिच डिस्टिल्स अनचेंज्ड एट अ कांस्टेंट टेंपरेचर आल्सो नोन एज कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। और टू सेपरेट देम यू हैव टू ऐड थर्ड, है ना। आप है ना तो दो, है ना, दो दोस्त होते हैं बहुत ही जिगरी है ना, तो दो दोस्त होते हैं बहुत ही जिगरी है ना, और दूसरे एक को क्या करना है, उनको सेपरेट करना है। तो कैसे करेगा दूसरा सेपरेट? दो दोस्त है बहुत ही मतलब पक्की दोस्ती है, बहुत ही पक्की दोस्ती, मतलब कितना भी झगड़ा होने तो वो दोस्ती है, मतलब वो सेपरेट नहीं हो रहे। क्या करेंगे? सिंपल सी चीज है भाई, तीसरा ला के खड़ा कर दो उसमें। मतलब क्या? जैसे दो दोस्त है मेल, वो बहुत जिगरी दोस्त है, सेपरेट नहीं हो रहे, तो एक लड़की ला के खड़ा कर दो उनमें, है ना। तो लड़की अगर आएगी तो एक का लड़की के साथ में बॉन्ड बन जाएगा और तीसरा ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाएगा। लाइकवाइज दैट, सो आइसोटोपिक सॉल्यूशन they are constant boiling mixture, they it is not easy to separate them. So what you have to add? You have to add third substance, you have to add third substance. So isotopic distillation क्या है फिर? So it is a distillation method in which isotopic solution or isotopic mixture is broken by addition of third substance which will form a new isotope with the one. जैसे मान लीजिए आपके isotopic mixture है ना, उसमें दो कंपोनेंट है A एंड B। ए बी क्या है? आइसोटोप है, ये सेपरेट नहीं हो रहे, तो आपको क्या करना है, इसमें थर्ड सब्सटेंस ऐड करना है। यू हैव टू ऐड थर्ड सब्सटेंस, सी ऐड कर दो। अब होगा क्या, ये सी क्या करेगा, आइदर इसके साथ में बॉन्ड होगा या फिर इसके साथ में बॉन्ड होगा। मान लीजिए सी ए के साथ में बॉन्ड होगा, यहाँ पे क्या बचेगा, ए सी, लेकिन बी तो फ्री रहेगा ना, बी क्या होगा, फ्री रहेगा, बी विल बी फ्री। तो isotopic distillation is nothing but the distillation method in which isotopes are broken by addition of third substance which will form a new isotope with the one of the component, है ना। दो दोस्त है, उनमें फूड डालना है आपको, दो दो बहुत ही जिगरी दोस्त है, उनमें फूड डालना है आपको, तो उनके बीच में एक लड़की लाके रख दो, आप खड़े कर लो, ऑटोमेटिकली फ्रेंडशिप ब्रेक होगा। तो है ना, दैट इज अ isotopic distillation. Now another type of distillation is nothing but the extractive distillation. It is a type of isotopic distillation only, extractive distillation. Extractive distillation क्या है कि the third substance which you are adding to isotopic solution, third substance which you are adding to isotopic mixture, if it is having less volatile and relatively non-volatile, अगर third substance to be added to break the isotope, if it is a non-volatile, relatively non-volatile as compared to other component to be separate, known as extractive distillation. मतलब extractive distillation is also a type of isotopic distillation, but difference क्या है, isotopic में जो थर्ड सब्सटेंस आप ऐड कर रहे हो तो उसका वोलेटिलिटी है ना सेम ही है, बट इन एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन जो थर्ड सब्सटेंस ऐड कर रहे हो उसका वोलेटिलिटी कम है एज कम्पेयर टू कंपोनेंट टू बी सेपरेट। और नेक्स्ट इज द डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। जैसे प्रेशर कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। जैसे आप वैक्यूम लगाते हो, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। सपोज इफ वाटर इज हैविंग 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट, इफ यू अप्लाई वैक्यूम, body water will start boiling at 80, 70, 60 depending upon the vacuum applied. Distillation under reduced pressure, when vacuum is applied, distillation under reduced pressure is known as distillation under reduced pressure. तो apparatus यहाँ पे क्लेजन फ्लास्क आपको यूज करना है, इट इज अ डबल नेक डिस्टिलेशन फ्लास्क, क्लेजन फ्लास्क। और डिस्टिलेशन अंडर reduced pressure उसको बोलते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन। तो एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। अगर आपने वाटर है उसके ऊपर प्रेशर ऐड किया, उसका वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100, वो 105 110 भी हो सकता है प्रेशर ऐड किया। तो अगर वो प्रेशर हटा दिया, मतलब वैक्यूम ऐड किया, तो जो वाटर 100 डिग्री को बॉइल होता है वही 80 को 60 को
40 को बॉयल हो सकता है। तो एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर increases the boiling point of and removal of pressure by vacuum decreases the boiling point. So this is used in the distillation under reduced pressure. It is the principle. It is used for a heat sensitive product and product having low viscosity or foamy liquids. Question इसके ऊपर आता है आपको. So how you can perform distillation for foamy liquid? Distillation under reduced pressure. मॉलिकुलर डिस्टिलेशन एक टाइप होता है, नेक्स्ट टाइप इज मॉलिकुलर डिस्टिलेशन. तो इसमें क्या है कि मॉलिकुलर डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन प्रोसेस इन विच ईच मॉलिक्यूल इन अ वेपर phase travels mean free path and gets condensed individually without intermolecular collision upon application of vacuum. तो मॉलिकुलर डिस्टिलेशन क्या है कि इन द मॉलिकुलर डिस्टिलेशन आफ्टर वेपराइजेशन each molecule in the vapor phase will travel a mean free path and get condensed separately individually without intermolecular collision on application of vacuum, है ना. So it is a, है ना, इसमें क्या है, it is a short path vacuum distillation. It is a type of short path vacuum distillation and extremely low pressure इसमें अप्लाई करना है. The extremely low pressure 0.001 ton. Short term exposure to short term exposure of distillate, शॉर्ट टर्म एक्सपोजर है क्या पे डिस्टिलेट का, हाई टेम्परेचर इन अ वैक्यूम एंड स्मॉल डिस्टिलेशन. मतलब यहाँ पे जो डिस्टिलेशन कॉलम है वो बहुत ही छोटा होता है. इट इज अ टाइप ऑफ शॉर्ट पाथ वैक्यूम डिस्टिलेशन एट एक्सट्रीमली लो प्रेशर, short term exposure of distillate liquid to the high temperature in a high vacuum, the distillation column, and small distance is between evaporator and condenser. उसमें 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, known as a molecular distillation. Molecular distillation. Next इसमें Langmuir-Knudsen equation that will describe you the yield of distillate for molecular distillation. मतलब मॉलिकुलर डिस्टिलेशन में इफ यू वांट टू चेक द यील्ड, तो द Langmuir-Knudsen equation is related with the distillation yield of molecular distillation. इसका इक्वेशन है यहाँ पे Langmuir-Knudsen equation. Q is equal to K into P into F, K into P into F into m by t raised to half. Q क्या है, क्वांटिटी ऑफ इवेपोरेटेड किलोग्राम पर आवर प्री प्रेशर है, टेम्परेचर है, m क्या है मॉलिक्यूलर वेट है, F क्या है सरफेस ऑफ इवेपोरेशन एंड K कांस्टेंट होता है. स्टीम डिस्टिलेशन सिंपल मेथड आपको होना है. स्टीम डिस्टिलेशन इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ हाई बॉइलिंग सब्सटेंस फ्रॉम द नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज. Substance with a high boiling point usually boil at a high temperature, and low boiling point will boil at a low temperature. So steam distillation is used for the extraction of volatile oil from crude drugs. Destructive distillation is also known as destructive distillation, एक टाइप होता है, also known as dry distillation. In the distillation method इसमें क्या है कि distillate is जो distillate होता है, जो distillate मिलेगा आपको, it is a decomposition product of a constituent of organic matter burnt in case of in the absence of air. तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में जो मटेरियल है उसको बर्न, जो लास्ट में आपका डिस्टिलेट मिलेगा वो दैट इज अ डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट ऑफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर व्हिच आर बर्न इन एब्सेंस ऑफ एयर. ये भी क्वेश्चन आता है आपको जीपैट में. डिस्ट्रक्टिव मतलब टाइप ऑफ डिस्टिलेशन यहाँ पे. कंप्रेशन डिस्टिलेशन इज आल्सो देयर. So this method was developed to meet the demands of water in the navy or fresh water. Navy में fresh water कैसे obtain करना है from sea water, इसके लिए compression distillation method है. All the distillation methods again you can see. पहला है simple distillation, also known as differential distillation. Distillation कैसे होता है based upon the difference in the volatilities of the mixture, है ना. And vapor pressure, difference in the volatilities and vapor pressure.
लिक्विड बॉइल्स व्हेन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. लिक्विड बॉइल्स कब होता है? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तब वो बॉइलिंग होता है. सिंपल डिस्टिलेशन इज कैरिड आउट इन द at a boiling point. Greater the difference in the volatility, more will be the distillation. Now simple distillation किसमें यूज करते हैं? Preparation of water for injection, preparation of volatile and aromatic water of ammonia, purification of organic compounds, preparation of official product like aromatic water of ammonia, nitrous ether, separation of mixture having volatile and non-volatile compound. इसका सिंपल डिस्टिलेशन हो गया. और फ्लैश डिस्टिलेशन क्या है? तो आपको मालूम है, ऑल्सो नोन एज इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन. इसमें क्या होता है? सेपरेशन इज बेस्ड अपॉन व्हेन लिक्विड इज पास्ड, हॉट लिक्विड इज पास्ड फ्रॉम हायर प्रेशर जोन टू द लोअर प्रेशर जोन. Flash vaporization is there. During this, chamber is cooled and fraction of a high boiling point is condensed, and with low boiling point is a remains vaporized. Used for the separation of two components having wide difference in the boiling point. Used in the petroleum industry to refine the crude oil. This is for example separation of petitol 60 and 80. Now fractional distillation. Next one is the fractional distillation, also known as a rectification. Fractional distillation is also known as a rectification. Because of the part of paper is condensed and written as a liquid, तो इसमें repeated condensation and vaporization होता है. Fractionating columns are used where partial condensation and vaporization takes place. It is a mean of mass transfer process involving the counter current division of component at each equilibrium stage. तो ये fractional distillation किसके लिए यूज करते हैं? Used for the separation of miscible liquids like acetic acid and water, chloroform and benzene. Drawback of this is nothing but it is not used for the miscible liquid which forms azeotrope. उसके लिए azeotropic distillation यूज करते हैं. Now next है आपका azeotropic distillation. Azeotropic distillation and extractive distillation दोनों में. Azeotrope क्या है? They are separated by addition of third component which will form a new azeotrope with one of the component of mixture and will make another component free. तो उसमें relative volatility of liquid mixture can be changed by addition of substance. जैसे for example benzene is added to break the mixture of water and ethanol. Water and ethanol क्या है? Water ethanol will form a azeotropic mixture. To break that, benzene is added. Benzene will form a azeotrope with ethanol and water will be free. Volatility of water is increased. That's how azeotropic distillation is there. Preparation of absolute alcohol, इसके ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है. Used for the preparation of absolute alcohol, 99% ethanol के लिए used in the petroleum industry also. Separation of toluene from isooctane, separation of paraffin hydrocarbons. Phenol is added to increase the volatility of isooctane. Separation of isooctane from toluene कैसे करते हैं? By addition of phenol. तो phenol क्या है? Third substance. Furfural is added to separate the butadiene from mixture containing butadiene, mixture containing butane and butene. Butane and butane का mixture is separated by addition of furfural. Right? Next होता है आपका distillation under reduced pressure. मैंने जैसे बोला है due to vacuum. जैसे आप vacuum ऐड करते हो, boiling point of liquid get decreased. जो boiling point है liquid का, जैसे boiling point of water is 100, है ना? at atmospheric pressure water का boiling point क्या है? 100, और in other term 101.31 kPa, है ना? But at 40 degrees Celsius vapor pressure of water is 9.33 if external pressure is reduced to the 9.33 H2O, and water will boil at a 40 degrees Celsius only. Normally water का boiling point है 100, लेकिन अगर वैक्यूम अप्लाई किया, एक्सटर्नल प्रेशर कम किया आपने, वाटर कम टेम्परेचर के ऊपर बॉयल हो. डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर यूजफुल फॉर द डिस्टिलेशन ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग एंजाइम, विटामिन्स, अल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड, टैन. स्टीम डिस्टिलेशन इमिसिबल लिक्विड्स, है ना? यूज फॉर इमिसिबल लिक्विड
Mixture boils when sum of the vapor pressure is equal to the atmosphere pressure. Turpentine and water mixture boils at lower boiling point because blood pressure of pure water. Turpentine oil has a higher blood pressure than water. Separation of water and toluene. Extraction of volatile oil from clove, anise, almond, eucalyptus, camphor by using Clevenger apparatus known as steam distillation. और लास्ट में आता है molecular distillation, also known as evaporative distillation, याद रखना है, और short path distillation, है ना. इसमें क्या है कि viscous liquid, oil, gases, waxy material and having high molecular weight substances will have very low vapor pressure and high boiling point. Viscous जो liquid है, oily है, oil, gases या फिर waxy material या फिर will have a very low vapor pressure and high boiling point. So to decrease the boiling point, vacuum is used. Vapor pressure about the liquid is much lower than saturated vapor in equipment. और pressure distance भी कम होता है. Very low is distance between the condenser. That's why vapor will flow mean free path. Condense will separate. It is used for the purification of chemicals like tricrysyl phosphate and dimethyl phthalate. ये separation of vitamin A from cod liver oil, concentration of vitamin E from fish and other vegetable oils. So molecular distillation. So this will end your distillation chapter. Distillation chapter यहाँ पे खत्म हुआ है. यहाँ पे मैं बोलता हूँ क्या important है. Molecular distillation, उसका सिंनिंग, उसका यूजेस इम्पोर्टेंट है ना. जैसे डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर क्या है, उसका यूजेस क्या है, इम्पोर्टेंट है. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स क्या है ना, और आइसोट्रोपिक डिस्टिलेशन क्या है, उसका यूज क्या है, ये यूज पूछेंगे आपको ना. जैसे ना सिंपल डिस्टिलेशन का यूज, फ्लैश डिस्टिलेशन उसका यूज, और ये जो मैंने बोला है आपको लैंगम्यूर-नूरसेन क्वेश्चन और मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन, उसके पहले अपन ने ये देखा है आइसोट्रोप डिस्टिलेशन, है ना, डिस्टिलेशन आइसोट्रोपिक डिस्टिलेशन. उसके पहले अपन ने देखा है ये आइसोट्रोपिक मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं, है ना. बॉइलिंग पॉइंट कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर वो भी देखा है पहले अपन ने, ये देखा है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वगैरह. तो ये सब इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है. तो जैसे अपना ये पार्ट हो जाएगा उसके ऊपर टेस्ट भी हो जाएगा, मतलब पूरा फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग अभी लूँगा मैं, मतलब उसके बाद में टेस्ट होगा उसके ऊपर. सी यू टुमारो. सभी लोग लेक्चर में ज्वाइन होते जाओ.